Yeah, hello. Hi, are we live? Can I get confirmations in the chat box, please? One second. Yeah. Hello, everyone. I hope I am audible. Hello. I need confirmations in the chat, please. So today we'll be starting with the time complexity analysis. I hope you guys have access to this drive folder here, and here we have updated our grid planner. And as you will see, today we'll have session one here, and that will be introduction to time complexity and arrays. So I guess we can start. If possible, please can I get some updates in the chat box, please? Yeah, yeah. Okay. Thank you. So we'll be starting with time complexity today. I hope you guys are energetic as I am to start learning the first and the basic concept of data structures. And time complexity is, of course, very important to understand the efficiency of algorithms. So without much further ado, let's get started. Okay. So the topic of today's is time complexity. First of all, the question arises is why is this important? Why are we even talking about time complexity, right? So it's very basic that we don't have a machine that can run infinitely fast, or we don't have machines that have super duper of space in them. So hence we will also consider space complexity along with time complexity. Now let us to understand the importance of time complexity. Let us look at a few example, a practical example. Say there are two machines. Okay, say there is machine A and there is a machine B. Now we have got specifications of these particular machines. Say machine A is very fast with 10 billion steps or operations per second. Okay, 10 billion op per second. And say machine B is a bit slow, say about 10 million operations per second. Okay, operations per sec. So if we compare in between these two, machine A is 1000 times faster, right? 10 billion and 10 million, so machine A is 1000 times faster. Now, say suppose we get a problem of sorting numbers, okay? Of sorting how many numbers? Say we get a problem to sort 10 million numbers, okay? 10 million numbers. And we have two programmers, say programmer A and programmer B. Programmer A will code into machine A and programmer B will be coding into machine B. Now, say suppose the programmer A has a algorithm with time complexity of n square. Okay, just have these terms in your mind for now. The time complexity of n square, and say programmer B has a time complexity of n log n. So now let's analyze.
what will be the delay and what all things will be there. So 10 million number of operations, right? So that is 10 to the power 7. Okay. And since it's squared, so 10 to the power 7 squared. And now see, machine A was 10 billion operations per second, right? So it will do 10 to the power 10 uh, operations per second. So we are left with 10 to the power 14. So 4 seconds. So machine A will take 10,000 seconds, right? Now, similarly, machine B has n log n of time complexity. Now, our n is this, the number of numbers that we have to sort. So that is 10 to the power 7. Okay. And we do log with 10 to the power 7. So say 10 to the power, we'll have to check what's log of 10 to the power 7. 1 second. Log 10 to the power 7. This is log base 2, okay? Log base of 2. We'll come to know how, why, and how this is log base 2. So we get this as approximately 4464 seconds. So we see that even machine A was very fast, handling 10 billion operations per second. Machine B was a comparatively very slow, 1,000 times slower. But still, with this efficiency, we are getting a time which is much less than this, right? 10,000 seconds and 4464. So practically, we can tell why time complexity of an algorithm is important now, right? Let me write. Time complexity of an algorithm measures how efficient your algorithm is. Okay, efficiency of algorithms. Okay. Now, for today's understanding, we will be covering two algorithms. One is insertion sort algorithm. The other one is merge sort algorithm. Okay. For now, I will like you to just hear what I say. You don't have to get into too much depth of insertion and merge sort algorithms, even if you don't know about it. You'll get to know about it in today's lecture and in further lectures. Why we need to understand insertion and merge sort is because we are comparing and we are understanding time complexity. Okay, so we will be going to learn two algorithms: insertion sort algorithm and merge sort algorithm. So within these algorithms, we have two algorithms: insertion, merge sort. Of course, all the other algorithms can have its own time complexities. We can analyze them too. But for understanding, we are considering these two algorithms. Okay. So what insertion sort does? In short, let me tell you. So if you have ever played cards, okay. So lots of people have a tendency to organize their cards. Okay, sorted way. So we'll have ace, then we'll have two, we'll have three, four, five, six. Okay. So what insertion sort does is, now say if you have, imagine if you have a card number 7 here, and if you have a card number 8 here. So what you will do is you will put 7 before 8, right? So this is exactly what insertion sort does. Say if we have a structure, okay. Now here comes a data structure called arrays. If people are not familiar with it, so just you will come in acquaintance with these all things, okay. So let's say we have 1, 2, 3, 8, 6, 7, 9. Now what we need to do here is, in order to sort this, what will be the sorted answer? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, right? So in order to sort this, what we'll do is, we will check and we'll find wherever we have a discrepancy, like here in 8 is 6 is smaller than 8, right? So 6 should come here. So what we will do is, we will shift 8. May here we will be shifting 8 as many number of times to get 8 in the correct position. Okay, how we will do, we will see that. Okay, but we will be shifting 8, and once we have shifted 8, so let's say we will be shifting 8 here, and now we'll be shifting uh, 8 here. Okay, and then since we see a7 is also less than 8, so we'll be shifting it, and then in place of 8 we'll be replacing it with 6. Okay, actually what we are doing here is, 1 second, let me go to the next page, you'll understand it far better.
I will also need you to have confirmations in chat whether you are following me, and if there are any disturbances, so please inform me. Okay. Yeah. So insertion sort. Let me first write the algorithm, then you will understand better. Okay. So the pseudo code. This is not an actual code, but a structure that is kind of a code which you can implement in any other languages, be it C++ or Java. So the pseudo code will be for j is equals to 2 to the array, say a. So a dot length will have a of I. One second. We'll have a key. I'll tell you what all these things are. The key will be equal to a of I. Now we assign, actually sorry, this will be a of j. Okay. Now we assign a variable I which will be j minus 1, and then while I is greater than 0 and I is no, actually, and array of I is less than is greater than key. Okay. So what we'll be doing is we'll be replacing all the values of I plus 1 with the key. I'm sorry. Subtract this and have a of I plus 1 is equals to key. Now let's run this algorithm in a given array. Okay. We have, let's say, 5, 6, 8, or rather keep it simple. We'll start with 1, 1, 3, 4, 2, 5. Okay. The sorted array will be 1, 2, 3, 4, 5, right? So how we will run this? We'll start with j equal to 2. So j is here. To a of array of length. Okay. The length of the array, sorry. So j will be going from this point till this point. Okay. And we assign key as array of j, array value at position j. So a of j here will be 3, and that will be our key. Okay. And I is j minus 1, so we have I here, right? Now this condition will check while I is greater than 0. So yeah, this I is greater than 0. Actually in array we have indexing starting from 0. Okay. But for in pseudocodes and for referential purposes, we consider it from 1, 2, 3, 4 in theory, actually. So let's consider this is 1. Okay. For now, I is greater than 0. Yes. And is a of I greater than key? Is a of I, can you confirm in chat, is a of I greater than 3? What is our a of I? It is equals to 1. Is it greater than 3? नहीं रहने दीजिए. So we know a of I is not greater than 3. So this loop will not execute. Okay. For now, moving on to the next part, j will now move to 4. Okay. Now let's run on j equals to 4. So our j is equals to 4. Again, we'll be putting these values, but again we'll see that a of I, that is this point, this a of I is not greater than the key, right? So this point will also not execute after this. But where the problem will arise? The problem will arise when j is here and I is here. Okay. So we see that we have a value 2 which is smaller than 4. So 2 should of course be before 4, right? So what we will do is, what in insertion what we do is, we shift 4, or rather we put 2 to the correct position by shifting these. So we have to shift 4 here. We also have to shift 3, and then we will have to put here 2.
You get it? How we will do that? Let me show you by running this, by using the dry run principle. Now, see, now our key will be one sec. Hmm. So now our key is 2, right? Key is 2. Now I is j minus 1, that is 1, 2, 3, 4 minus 1, that is now I is equals to 3. Is I greater than 0? Yes. If array of I is greater than key, so a at I is equals to 3, which is greater than 2. So this condition passes here. Now we move on inside the loop. We have a of I plus 1 equals to key. So what we do here is, the first condition here when we do is we put 4 here. Okay, so we have 1, 3, 4 and 4 again. Okay, we replace this 2, actually it was 2 before, we replace these 2 by 4. Okay, and then we move I minus minus, so now I is here. Okay, I is this one. Now we again check, is I greater than 0? Yes. And is a of I greater than the key? Is a of I, that is 3, greater than 2? Yes. So again the loop passes and we go inside the loop. And now what we do is a of I plus 1 equals to the key. So I was here, I plus 1 will be this. So we are replacing this 4 by 3. So we have 1, 3, 3, 4 and 5. Okay. Now the ending part. Now we, of course, the j will go on. This is inside j actually. Okay, this is inside j. The indexing tells you that which portion of the code is inside which loop. So now we assign a of I plus 1 equals to key. So this position now we assign back to 2. Okay, because our key was 2. So a of I plus 1 is equals to 2. So now we have this in the sorted order, right? 1, 2, 3, 4, 5. So this is basically the pseudocode for j is equals to 2. We start from this point. We carry on till the last point, okay? We assign every points as one key. We take I as one place before that. And then we move I backwards. And then we'll see कि कहाँ पे I का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है J वाले टर्म से. जहाँ पे भी ज़्यादा हो रहा होगा तो हम लोग वो सारा एरे को उधर शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, बाकी सारा एरेस को, एरे का वैल्यूज को, और फिर लास्ट में अपन 2 को या फिर जो भी छोटा वैल्यू है उसको उठा करके वापस उस पोजीशन पे डालेंगे जो पोजीशन उसके लिए करेक्ट होगा. ओके, सो दिस इज द सूडो कोड. नाउ मूविंग ऑन टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट, हाउ वी आर एनालाइजिंग दिस. ओके, let's move everything here a bit aside because we'll be looking at the time complexity part. Now see, your this line in time complexity, we consider that every line of code takes order of one time. Okay, let me write it properly. Every line of code takes order of one time. Since every line of code is taking order one time, how many times will this line run? From j is equals to 2 to a of the length of the array, right? So this will run for this, starting with this till the ending. So n minus 1 times. Okay. Let us consider that this, if this thing runs for n times, then how, at what, like what will be the number of times this will run? This will run for n minus 1 times. This will run for n times. Why? Because at the end we will be also checking that one condition where this condition fails. So from 2 till n we'll have n minus 1 plus that condition plus 1 where this loop will fail. So in total we have n number of times this line will run. This will run n minus 1 times, no doubt. This will run n minus 1 times. Now look closely here. Say for some condition, say tj, this loops passes. So we'll have
this as, we'll denote this as sigma tj from j is equals to 2 to n. Okay, this is the condition where this loop passes. We are considering it as tj for a moment. Okay, so इसका क्या होगा अगर, इसका will be this same if we call it as f of some n. So this will be f of n minus 1. Why? Because ये अगर tj के तरह रन कर रहा है तो ये tj माइनस 1 की तरह ये सेम सिग्मा फंक्शन में रन करेगा, j is equal to 2 of n tj माइनस 1. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अगेन while लूप भी एक कंडीशन एक ऐसा चेक करेगा जिसमें ये फेल होगा, राइट? तो ये एक बार कम चलेगा उससे, तो tj माइनस 1. ठीक है, for shorter notations I am writing this, or let's not write this, let's write the complete notation for clarity. ये वाला पार्ट अपना tj माइनस 1 तक चला, and the same thing goes on to this, ये भी उतना ही चलेगा. So let's match it and let's do it a bit properly. This runs for this amount of time and this also runs for this amount of time. Okay, and now what will be the amount of time this runs for? This will run for, this is inside this loop, remember. Okay, so this runs for n minus 1, this runs for n minus 1, so this will also run for n minus 1 time. Now adding up for the total time complexity, what we'll do is the total time complexity. Is it visible? If you don't follow anywhere, you can stop me in the chat. Okay, I'll also give time for doubts. So this will be the summation of all of this. Okay, say we generally consider a constant value, but even if we don't consider the constant value, even then we have n plus, we have n minus 1 plus n minus 1. So n minus 1 plus n minus 1 plus sigma tj j equals to 2 to n plus 2 to n tj minus 1. This is 2 times, right? So let's add a 2 here and plus n minus 1. See, as we saw, this is 2 times, so this kind of constants are added here. We may or may not bother about the constants right now. So this will be the time complexity. But अब ये क्या दिख रहा है, इतना बड़ा सा है बहुत, तो इसको छोटा करते हैं अपन. कैसे? से इंसर्शन सॉर्ट का बेस्ट केस क्या हो सकता है? सोचो, इंसर्शन सॉर्ट का बेस्ट केस हो सकता है कि हमारा जो ये एरे है ये ऑलरेडी सॉर्टेड हो. ओके, अभी अगर ऑलरेडी सॉर्टेड एरे होगा तो यू सी दिस कंडीशन विल नेवर पास, राइट? ये कंडीशन कभी पास ही नहीं होने वाला, तो ये लूप हमारा चलेगा ही नहीं कभी, और रादर सिर्फ ये कंडीशन चेक होकर खत्म हो जाएगा, बट ये वाला लूप कभी नहीं चलेगा. ओके, सो दिस विल एक्चुअली ऑल्सो रन फॉर n माइनस 1 टाइम. सो ये जितना भी हमारा सिग्मा वाला टर्म्स है ये सारा will also be running for n minus 1. So अगर बेस्ट केस सिनेरियो कंसिडर करते हैं, बेस्ट केस सिनेरियो जो कि कब होता है, it happens in a sorted array. Are we facing anything? Okay, right. So बेस्ट केस सिनेरियो अपने कब होगा? जब सॉर्टेड एरे होगा. ओके, अब सॉर्टेड एरे में बेस्ट केस में बोला ये काम नहीं, ये वाला लगेगा नहीं अपने को. ओके, दिस ये पूरा पोर्शन अपने को नहीं लगता क्योंकि वो लूप ही रन नहीं होगा. सो वी विल बी लेफ्ट विथ n plus n minus 1 plus n minus 1 plus this all are gone, so n minus 1. So we see this is n plus n plus 1 plus n, it's almost equal to 4n, and then we have minus 1 minus 1 minus 1, so it's minus 3, and we generally add a constant say c for something that goes up and down in the code. So we see what is the order of this. We have learned about linear order in algebra, right? Linear order equations. So what will be the order of this? Linear equations we have learned, so the order will be 1, right? The degree of the equation is 1. So this is what is denoted as, say, a time complexity of Cn where C be any constant. Okay. Where C is a constant. And in time complexity terms, we denote it by big O of n. We'll come to what big O of n is, okay?
We'll come to what big O of n is, and then we'll also see about the merge sort which we have, which is pending actually. So this is the best case scenario. Now we are considering the worst case scenario. So when do we have a worst case scenario in this in this array? Since this in this insertion shot we'll be running this particular loop. Okay, this particular loop will be running every time we get a anomaly. Okay, so the worst case will occur when we have a reverse sorted array. Reverse sorted, that is a descending array. Like पहले हमारे पास 5 4 3 2 1 रहा, इस टाइप का कुछ array रहा, तो we'll have a worst case scenario. इसमें क्या होगा कि now this will start running uh, for every case, right? ये n-1 टाइम्स चल रहा है ना, ये भी n-1 टाइम्स चलने लगेगा. ये सारा केसेस में ये पास कर जाएगा, राइट? सारा केसेस में ये पास कर जाएगा. So we'll have a worst case scenario here. Are we following, guys? Hello? Okay. All right. So now let's look at what will happen at the worst case scenario. We'll have n plus n-1 plus n-1. ये वाला तो हमारा जितना था उतना तो रहेगा ही, प्लस ये वाला सीन का क्या हो जाएगा कि देखो J2 है ना, तो मैक्सिमम कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है इसका रन करने का. अगर J यहाँ पे हो तो ये 1 एक ही बार रन कर सकता है, राइट? एक, और एक्चुअली एक बार वो कंडीशन जहाँ पे ये लूप एग्जिट करेगा, सो ये 2 बार रन करेगा. अगर J यहाँ पे रहेगा तो मैक्सिमम कितना पॉसिबिलिटी है इसका रन करने का? इफ से J इज 3, इफ से J इज इक्वल्स टू 3, तो I कहाँ जा सकता है? I भी 3 जगह जा सकता है ना. 2 जगह तो वो खुद से जाएगा, और एक कंडीशन होगा जहां पे लूप एग्जिट करता है, जब लूप कंडीशन फेल होता है. सो वी एड अप, सो इट विल आल्सो बी इक्वल टू 3. सिमिलरली J विल बी 4, तो I तो 3 हो जाएगा, और एक कंडीशन जो वहां पे लूप एग्जिट करे. सो वील हैव the number of value J holds is the number of value this will run, this particular loop will run. So we'll have sigma J equals to 2 to n up to J plus this will also be sigma 2 times J is equals to 2 to n. See now Tj minus 1, so J minus 1, right? प्लस वो लास्ट वाला n-1. सो इफ वी सी इट, देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट इफ वी सी इट, देखो ये वाला टर्म्स तो ऑफ कोर्स इट विल गिव समथिंग इन अ लीनियर ये टर्म में ही, तो इट विल बी 3n-2 कम ऐसा कुछ. बट ये वाला जो पार्ट रहेगा ना, सी if this function has from 1 to n, so we write it as n into n-1, sorry n plus 1 by 2, right? बट ये J2 से स्टार्ट हो रहा है, सो हम लोग को एक 1 माइनस करना पड़ेगा. ओके, so we have this, similarly this, and this one एक n-1 यहाँ पे अगर अपन जोड़ लें, इस n-1 को अपने काउंट करके यहाँ पे लिख रहा है, so it will be n plus n plus 1 plus 1, so 4n minus 1 1 1 3, 4n minus 3, इसका ये वाला आ रहा है. और similarly if we do this, it will somewhere be like -1 का तो it will be, see अगर हम if you know to break sigma, it will be sigma J minus sigma 1, जहाँ पे J तुम्हारा 0 2 to n जाएगा यहाँ पे. ओके, एंड दिस ऑल इज ट्वाइस. सो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सेम चीज, इसको कर रहे हैं. सो J के लिए तो अपन निकाल चुके हैं, इट विल बी n into n plus 1 by 2 minus 1. ओके, नाउ इसके लिए क्या होगा? If it is n 1 to n, then it becomes n, but it's from 2 to n, right? So it becomes n minus 1. This is what we get. So overall if we look, थोड़ा intuitively देखेंगे, तो we see that we have 4n here and we have n square का टर्म है यहाँ पे. देखो ये 4n minus 3 तो रहेगा ही, बट यहाँ पे एक n square का टर्म आ जा रहा है, this particular portion here. यहाँ पे एक n स्क्वायर का टर्म आएगा, यहाँ पे भी एक n स्क्वायर का टर्म आएगा, जो कि कैंसल आउट नहीं होगा. सो इफ यू वांट यू कैन सॉल्व, बट आई एम टेलिंग यू कि वी विल हैव समथिंग इन अ फंक्शन ऑफ, एज अ फंक्शन ऑफ n स्क्वायर,
and hence this time complexity, the worst time complexity will be order of n square. Okay, so we'll see what this O of n square, big O of n square means. But देखो इसका best, what we had to see was best case time complexity order of n, where the array is sorted. Worst case time complexity, the order of n square, where the array is reverse sorted. Okay, now we'll see what the notations are. Okay, let's move on to, this is a better pen, right? Okay. Asymptotic notation. Are you guys following? Hello, you can tell me in the chat box. इसमें कुछ दिक्कत था इंसर्शन शॉट में, कुछ अगर नहीं समझ में आया, आई नो दिस इज अ बिट अबाउ, ऊपर ऊपर से गया होगा कुछ कुछ चीज़ है, बट इतना अपने को रिक्वायर्ड नहीं है व्हेन वी डू लीड कोड एंड स्टफ्स. वी वोंट नीड दिस थ्योरेटिकल पार्ट्स. ये हम बता रहे हैं क्योंकि तुम लोगों को इफ यू हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ दिस आल्सो, तो तुम्हारा क्लासेस में और एग्जामिनेशन में थोड़ा इजी होगा. इवन इफ यू आर नॉट very much concerned about this particular theory part, it's completely fine. But if you know, it's actually better. Yeah, you can tell me in the chat box if there is anything you need to ask about. Yeah, all these you will get in the notes section. You will just have to check it once. रिसेंटली एक बार देख लेना, क्योंकि ये वाला चीज तुम बाद में देखो तो शायद समझ ना आए. एक बार आज ही देख लेना लास्ट में. ओके, I also have a well prepared note, so if someone is looking for notes, let me show you. I have lots of notes regarding everything, so if you want I can get it to you. Okay, ये actually कुछ टाइम का मेहनत है. So yeah, you'll also get insertion sort and all stuffs, quick sort and all. I have quite a few things here. So see, we have complete good notes of merge sorts and all. I have lots of things. So if you want, if any one of you guys want notes, can ask with me. Okay, ask it in the DM or in the group. I'll make sure you get it. Okay, this is a proper notes, and this is what we are like learning right now. Fine, I guess we'll have this insertion sort also, I guess. See, there are lots of ways to sort. Here we have bubble sort, insertion sort, heap sort. We don't have to look at all of these stuffs. Okay, so don't get afraid right now. We'll be looking in it from time to time. So let's get into the asymptotic notations here. This pen is a bit better one. Fine. Let's zoom in. Okay, so to represent time complexities, what we use is some notations, which is asymptotic notations. What is asymptotic means? Whenever a graph tends to infinity, this portion is known as asymptote. Okay, this portion is known as asymptotic notation. Asymptote, right? So here what we will be considering is not the values of n which is very small. Okay, we will consider values of n which is very large, like it's very significant. Okay, that's what asymptotic means. So we define the time complexity in the following notations. Once we'll get onto the notations first, and then we'll see what these means. Okay, so the first one is big O notation. It is actually pronounced as big O. It's like it's the worst case time complexity. That's why it's called O. So big O, or actually big O. You can tell it. You can tell anything. Then we have omega. This is a big omega notation. We have theta notation. Now we also have a smaller O notation. We also have a smaller omega notation. This is a smaller O notation, and this is a small omega notation, or little omega notation, whatever you call little omega notation. Okay,
I'm not sure about if there exists a small theta notation. I think it does not exist. But in one instance, I have seen people writing that there is a small theta notation, which somewhat doesn't make sense, but it's okay. It's fine. We are only considered about these three, and you'll see that we are mostly considered about this particular thing here. Okay, big O notation. Now let's carry on what these are. Okay, starting with the big O notation. So we call a function, we state it in terms of functions. Okay, so we call a function big O. Say gn is a function here. We call gn a big O of gn if it has sets of fn. Okay, has sets of fn. Fn is also a function such that such that such that of course it's time, so it is greater than 0, and we have fn that is less than fn that is, one second, we have that is less than order of gn, right? F of n that is less than equals to c times g of n. If I'm not wrong, let me just confirm it once. Let me just quickly confirm it once, okay? Because it's time I have run, like, gone through these things. I guess I have written it correctly. Is there the function? Yeah. The function is less than CF. Okay, sure. This is right. Okay. Okay. So a function is satisfied and it is correct to be called as order big O of Gn if there exists some set of functions Fn which is less than C times Gn, and there exists a C which is a constant and an n naught which is a constant for all n that is greater than or equal to n naught. I guess this was it. Okay. Now, what does this thing means? You will understand it graphically. That would be more better. You see. Do we have a graph here? Okay, we do have a graph. Is it visible? Let me change colors. Okay, fine. Yeah. So consider this as n. Okay. This is the number of terms जिस पे हम लोग सॉर्ट करते थे, उसी टाइप से ये नंबर ऑफ टर्म्स है. ओके. अभी एक फंक्शन को हम ओ ऑफ जी एन तभी बोल सकते हैं. लेट्स से दिस इज अ फंक्शन का ग्राफ एंड दिस इज ओ ऑफ जी एन ओनली इफ उसके नीचे का जो फंक्शन है ना, बाकी सारा फंक्शन इज बिलो इट. ओके, दिस पोर्शन, दिस इज द सेट ऑफ फंक्शंस हियर. तो कि ये जीरो से बड़ा हो, ऑफ कोर्स ये जीरो से बड़ा हो, बट ये सी ऑफ जी एन से इक्वल टू या छोटा हो उससे. रिमेंबर दिस, इक्वल टू और स्मॉलर. ओके, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अपर बाउंड ऑफ अ फंक्शन. अपर बाउंड ऑफ अ फंक्शन. ओके, इसको हम लोग असिम्प्टोटिकली अपर बाउंड भी बोल सकते हैं. और इट इज अ गारंटी, इट इज अ गारंटी कि अगर आपका एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इन ऑर्डर ऑफ जीएन, तो वो जो एल्गोरिदम है वो इससे ज्यादा टाइम नहीं ले सकता. वो गारंटी है कि इससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा इफ इट इज बिग ओ, क्योंकि वो वर्स्ट केस सिनेरियो है ये. बिग ओ इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि सबसे खराब से खराब में भी वो इतना
इतना बेटर परफॉर्म करेगा, बट इससे खराब परफॉर्म नहीं करेगा. ओके, so this is what big O notation means, and we'll always be concerned about this notation only, because again, why? Because it's a guarantee कि इससे खराब perform नहीं कर रहा, and most of the average cases fall under this. Okay, एवरेज केस सिनेरियो. और ये सिनेरियो बहुत बार होता है. लेट्स से कि वी आर सर्चिंग फॉर समथिंग, वी सर्च फॉर समथिंग एंड वी डोंट फाइंड एन एलिमेंट, सो दैट्स अ वर्स्ट केस सिनेरियो. तो उस केस में ये बिग ऑफ एन की तरफ, मतलब बिग ऑफ एन के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, बिग ऑफ सॉरी जीएन के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये परफॉर्म करेगा ये एल्गोरिथम्स, जब वो वर्स्ट केस में रहे. ओके, मूविंग ऑन, वी हैव another notation as omega notation. Look, everything is almost same, but there is a very small catch here. So a function can be called as omega of gn if there exists, this is again a set of function fn, such that the function of course is greater than 0, but this time it is actually above this. ये देखो, there is a huge difference here. This fn is less than c times gn, and here fn is greater than equal to c times gn. Okay, this is the portion that we have to like be looking after, क्योंकि 0 से बड़ा रहेगा, that is very obvious, but this is the thing we will be looking after. Okay, this thing, fine, such that there exists c and n naught that is a constant, and for all n greater than equal to n naught. What does that mean? Again, if we look at this graph here, तो ये वाला हमारा n होता है, and say if this is omega of gn, तो बाकी जो हमारा ये जो फंक्शन का सेट है ना, दिस विल लाई अबव दिस, कैन टच दिस लाइन एंड विल लाई अबव दिस, अबव इसके ऊपर कहीं भी. सो दिस इज एक्चुअली अ लोअर बाउंड ना, इससे नीचे नहीं जा रहा फंक्शन, इसको टच कर सकता है बट इससे नीचे नहीं जाएगा. सो अगेन दिस इज अ लोअर बाउंड ऑफ अ फंक्शन. this is considered as the best case scenario. नीचे का जो ये रहेगा when it touches this, so it can be considered as best case scenario when it is the least among all these functions. Okay, when it is a minimum of omega functions, तब वो बेस्ट केस सिनेरियो हम लोग बोल सकते हैं उसको. एज इन वी हैव लोअर बाउंड क्या है इंसर्शन शॉर्ट का लोअर बाउंड वुड बी n, क्योंकि वो अगर सॉर्टेड भी रहेगा तो भी वो बेस्ट टू बेस्ट n परफॉर्म करेगा, उससे ऊपर ही परफॉर्म करेगा बाकी सारा फंक्शन. ये बेस्ट केस सिनेरियो है. ओके, नाउ वी हैव अ थीटा नोटेशन. लेट्स क्विकली सी व्हाट थीटा इज. ये दिस इज एक्चुअली सैंडविच्ड between big O notation and omega notation. तो ये वाला ये सेंटर का पार्ट है एक्चुअली, ये वाला पार्ट. लेट्स लुक एट द ग्राफ फर्स्ट, उसके बाद ज्यादा समझ में आता है. सो इफ दिस इज big O of a function say gn, is it all fine? Do I need to zoom it a bit more? Can you please confirm? Zoom करना है क्या थोड़ा? Okay, sure. I guess now it's fine, I guess. तो थीटा नोटेशन तब हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना, जब ये O ऑफ gn है, और हम लोग जैसे देखे कि ये ओमेगा ऑफ gn था, बट थीटा ऑफ gn ये बीच में सैंडविच्ड है, ये वाला पोर्शन, दिस सारा फंक्शन जो यहाँ लाई करेगा
थोड़ा सा ओके फाइन। हाँ, तो अभी इसको हम लोग थोड़ा फंक्शन के वे में लिखते हैं विच इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर द एकेडमिक्स वाला पार्ट। ऐसे में ध्यान रखने का नहीं रखने का दैट्स योर चॉइस। Academically you need to anyways learn it. Okay, so a theta of gn is all the sets of the functions fn such that such that 0 से बड़ा हो। ओके, c1 से c1 ऑफ gn से बड़ा हो बट c2 ऑफ gn से छोटा हो। ओके, ये बीच का पार्ट है जहां पे क्या है कि सच दैट देयर एग्जिस्ट्स c1 c2 और एक कोई और एक कांस्टेंट n नॉट इज अ कांस्टेंट and n is greater than equals to n. This is a denote ये बस डिनोट करने के लिए है। बाकी if you remember this that's well and good and that's enough I guess। उसके ज़्यादा एकेडमिक पर्पसेस है यस, बट लीड कोड वगैरह के पर्पसेस है ना। आई गेस तुम बिगो पे बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो तो भी वो बहुत अच्छा है, सही रहेगा। अब लेट्स क्विकली सी स्मॉल और वो नोटेशन यहीं पे, वी वोंट वेस्ट लॉट्स ऑफ टाइम इन दिस। ओके, स्मॉल नोटेशन क्या होता है ना, ये स्मॉल थीटा लगेगा। स्मॉल नोटेशन क्या है कि ये लूजली बाउंड होता है, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, सिर्फ ये इक्वालिटी वाला साइन जो होता है ना ये हट जाता है कि ये वाला फंक्शन 0 से तो बड़ा रहेगा बट c टाइम्स gn से छोटा रहेगा। ये वाला जो स्मॉल ओ नोटेशन ये कभी ये लाइन पे नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इक्वल कभी नहीं हो सकता, उसके नीचे सारा फंक्शंस का सेट इक्वल नहीं होगा, सो दैट इज लूजली बाउंड। सिमिलरली यू विल अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि ओमेगा स्मॉल ओमेगा क्या होगा। स्मॉल ओमेगा इज नथिंग डिफरेंट बट कि द फंक्शंस कैन be above this big omega of gn but it will never touch this specific line, so it will be like 0 से तो बड़ा of course but it will always be sorry wait one second। ठीक है, ये वाला पार्ट है बस स्मॉल ओमेगा में थोड़ा ध्यान रखना, इक्वालिटी साइन होल्ड नहीं करता, बाकी सब सेम रहता है और ये स्मॉल ओमेगा। ओके, स्मॉल थीटा का नोटेशन पता नहीं भाई होता है कि नहीं, लेट्स चेक, वी आर लर्निंग हियर सो व्हाई नॉट। स्मॉल थीटा नोटेशन, yes, see why doesn't small theta asymptotic notation exist, but हम कहीं तो देखे हैं, मेरे को जहाँ तक याद है they have talked about small theta। okay, let's not waste time, both upper and lower। this is a good one, good logic actually कि क्यों एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। सी स्मॉल ऑफ एन इज सारा ओ का एन मतलब बिग ऑफ एन माइनस थीटा ऑफ एन, राइट। देखो स्मॉल ओ एन है जो लूजली बाउंड है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो थीटा ऑफ एन इसमें से माइनस कर दे बिग ओ ऑफ एन में, तो वी आर गेटिंग स्मॉल ओ ऑफ एन का ये, वी कांट टच द अपर बाउंड। यहाँ स्मॉल ओमेगा में वी कांट टच द लोअर बाउंड, बट जब हम थीटा एन थीटा एन में माइनस करते तो इट डजंट मेक सेंस ना, कि बचेगा क्या फिर। तुम अपर बाउंड भी टच नहीं कर सकते, लोअर बाउंड भी टच नहीं करते, बट थीटा में तो दोनों इंक्लूडेड है, अपर और लोअर, तो उसमें फिर बचेगा नहीं कुछ करने को। सो आई गेस इट्स नॉट practically possible. If it is there, then maybe I don't know about it. Okay, moving on. What's the next topic? We are done with notations right now. Why we are considering the big O notations? I told you. हम लोग लीड कोड करो चाहे कहीं भी कुछ भी में, it will always ask you to answer that your answer should be in order of this, in big O of this, in big O of this. Why? बिकॉज इट्स दी वर्स्ट केस सिनारियो। हम लोग बहुत बड़ा इनपुट्स लेते हैं लीड कोड में या कोड फोर्सेस में, इनपुट्स का साइज बहुत बड़ा रहता है 10 to the power 8 9 10 मे बी मोर। छोटा छोटा इनपुट्स में इट्स ओके, बट बहुत बड़ा साइज जब रहता है ना तो वर्स्ट केस सिनारियो को ही कंसिडर किया जाता है। ओके, लेट्स आल्सो लुक एट द ग्राफ्स ऑफ दिस। ओके, स्पेस बचा भी है, लेट्स लुक एट द ग्राफ्स, which notation is which is better। ओके, यहीं से देख सकते हैं डायरेक्ट ग्राफ ऑफ नोटेशंस।
सी पहले तो अपना वो ऑर्डर ऑफ ओ ऑफ एन का जो आता है, let me have a line here, वो तो इजीली एंड एवरीवन नोस कि ऐसा होगा, ठीक है। इसको चेंज करो। फाइन, ये तो ओ ऑफ एन का है फॉर श्योर। ना ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे होके जाता है, इफ यू रिमेंबर, एक ग्राफ है, अगर ये एन है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का टर्म होता है ना, एक वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर हम लोग पढ़े हैं, दैट गोज समवेयर राइट दिस लाइक दिस, राइट। You can, I am unable to draw it here, I'm not familiar with this platform, so this inkdo, so it's okay, I'll take time. This portion is 0, and if you want to get the intersection, you can do this like y is equals to n ka line, y is equals to n square ka line. So if you put the value, you will get this intersection as 1, okay। So वो सब तो ठीक है। यू कैन मैथमेटिकली ड्रॉ ग्राफ्स थोड़ा सोच करके, log x का बनाना है, जैसे सम अदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज विल बी डिस्कसिंग अबाउट वुड बी log ऑफ n। तो log ऑफ n के लिए बनाना हो अगर, तो log बेस 2 होता है एक्चुअली, तो 2 टू द पावर 0 विल बी 1, राइट। सो इस पॉइंट पे ये 1 को टच करना चाहिए, वेट वन सेकंड, this is showing off logarithmic this n, if this is 0, so this will be 2 to the power what is 0. Show this logarithmic. There should be a discontinuity here. It should be minus infinity. Log x graph goes like this, right? I actually put values and check. I don't remember the graphs of every mathematical graphs. Why is it not working? 1 second. It's infinity, right? It is 2 पे value 1 होगा. So when it's 2, its value will correspond to 1. Yeah, this is how log x should go. Order of log n. आप वैल्यूज डाल डाल कर भी देख सकते हो, यू डोंट नीड टू रिमेंबर द ग्राफ्स। हाउ डिड आई डू इट इज वाज कि log बेस, आई होप इफ इट्स नॉट विजिबल, log बेस 2 ऑफ n है ना, तो अगर हम लोग वैल्यू 2 को n को 0 डालते हैं, तो 2 रेज टू द पावर व्हाट इज 0, तो यू सी 2 रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी विल बी 0, राइट। क्योंकि तुम 2 पे पावर माइनस इन्फिनिटी करोगे, वो 1/1/2 टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, दिस विल कॉरेस्पॉन्ड टू 0। तो जब वैल्यू यहाँ पे 0 होता है n का, ये n का वैल्यू 0 होगा, तो ये वाला लाइन ना एसिम्प्टोटिकली नीचे जाता है माइनस इन्फिनिटी पे, एंड देन इफ यू पुट द वैल्यूज अगेन, बहुत फेमिलियर सा वैल्यू डालना है बस तेरे को, कि log 2n है, एंड लेट्स से इट्स 2, आई नो इन 2 इट्स 1, इन इन्फिनिटी दिस विल बी इन्फिनिटी। तो 2 पॉइंट मिल गया, बाकी का ग्राफ तुम इंट्यूटिवली ड्रॉ कर सकते हो सारा। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ log ऑफ n, ओके। सिमिलरली इफ यू ड्रॉ स्क्वायर रूट का ग्राफ वगैरह वगैरह, यहाँ पे हम पॉपुलेट नहीं करेंगे, यू कैन सी दिस हियर, या दिस इज द वर्स्ट टाइम कॉम्प, दिस इज अ कंपैरिजन, ओके। ये n का ग्राफ है, हाँ राइट, दिस वन, ये n है, log n उससे बेटर होगा, सी, क्योंकि वो बहुत नीचे है ना, तो ये कंप्यूटेशंस है, नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस, तो ये बहुत कम करेगा कंप्यूटेशंस। कांस्टेंट तो ऑफ कोर्स ऑर्डर ऑफ 1 है, वी कैन मेंशन दिस हियर एक्चुअली, एक कांस्टेंट का, दिस इज ऑर्डर ऑफ 1, ओके। कांस्टेंट तो एक सिंगल टाइम में, दिस इज द बेस्ट, and as you move towards the y-axis, so the time complexity gets worse and worse, okay। ये बहुत खराब है, in factorial goes more than exponential, so we always try during solving lead code and all, we always try to be in this range, n log n,
n square in some cases in brute force algorithms, but we try to be in this range. We never go to n factorial unless and see, when we'll put n factorial is in brute force of permutations, when we have some kind of permutation operations. If you remember, permutation is n np npr is something around n factorial upon n minus r factorial or something. So there we'll see about factorials, right? ओके, सो वी आर डन विद दिस ऑल्सो। ग्राफ तुम एक बार थोड़ा वहां से देख लेना क्योंकि यहाँ पे हम अच्छे से नहीं बना पाएंगे। ओके, दिस विल डिस्कस लेटर। लेट्स हैव अ न्यू पेज। मूविंग ऑन टू द मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। वो इज इट 1 hour ऑलरेडी? हम लोग थोड़ा जल्दी देखते हैं फिर, ठीक है? ओके वेट 1 सेकंड। बस एक बार फोकस करना, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम में हम लोग एल्गोरिथम्स अभी नहीं लिख रहे होंगे, सिर्फ होता क्या है ये बता देता है, एंड देन वी विल बी एनालाइजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। So merge sort में भी we are given an array, okay? We are given an array. Any array, say 2, 3, 5, 6, 9, 1, 4, 8, 2. Okay. So this array is first broken down into half parts. So इसमें देखो is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we broke it into a floor of p plus q by 2. So it's actually 9 by 2 here, which is 4. If you don't know what floor is, let me quickly tell you. Floor is the GI function, if you remember, greatest integer function. इसका वैल्यू 4.5 होगा, बट इसका GI फंक्शन 4 होता है, तो फ्लोर वैल्यू उसके नीचे का पार्ट, नीचे वाला इंटीजर होता है। सो दिस इज 4। सो यहाँ पे हम लोग 4 इधर डिवाइड करते हैं। वी गो ऑन कंटिन्यूसली डिवाइडिंग इट अंटिल वी रीच अ सिंगल वैल्यू। ओके, इसको डिवाइड किया, अभी 1 आया, ठीक है? एंड नाउ वी बैक ट्रैक, तो इसका बाकी का 1 आता है इधर से राइट साइड वाला। इसमें हम लोग 2 ले चुके हैं, तो 2 राइट साइड वाला होगा, ओके? और इसमें हमने 4 ले रखा है, तो यहाँ पे 4 राइट साइड होगा। अभी ये फिर से वहां से 2 टूटेगा, फिर ये सिंगल में टूटता है, फिर 1 सेकेंड, हाँ, फिर बैक ट्रैक होके ये एक और सिंगल में टूटता है, एंड देन गोज बैक, दिस टर्न्स टू 2 more, this then turns to half, this turns to this, goes back। तो तुम एक अभी के लिए बस एक आइडिया रख के ऐसा एक रिकर्शन ट्री बनता है, ठीक है? वेयर वी कंटिन्यूसली डिवाइड हाफ 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 करके अनलेस एंड अनटिल वी गेट वन सिंगल एलिमेंट, जो कि यहाँ पे इन दिस केस इट्स 2, 3, ये भी डिवाइड करेगा। सो इट्स 5, 6, 9, 1, 4, 8। एक्चुअली यहाँ पे एक और होगा। सो वेट 1, 2, 3, 4, 5, 5 by 2 is 2, so 2 and 3 this side, okay? तो यहाँ पे 3 होगा। Now this, so 3 by 2 is 1, then we have 2, then we have 1, then we have 9, 1, 4, 8, 2, okay? 1, 4, 8, 2। So देखो, इसमें मर्ज सॉर्ट में देयर आर 2 थिंग्स। फर्स्ट की यू कॉल मर्ज सॉर्ट रिकर्सिवली, ओके? अभी इसका इन डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग का काम सिर्फ अभी रिकर्शन ट्री से है। रिकर्शन जब पढ़ेंगे तब हमें मर्ज सॉर्ट देखेंगे वापस से। एंड द नेक्स्ट थिंग इज यू एक्चुअली मर्ज 2 डिफरेंट एरेज, 2 एरेज। मर्ज कैसे करते हैं? से आई टेल यू मर्ज का एल्गोरिथम, बट विल नॉट राइट एल्गोरिथम से, ओके? अभी के लिए बस ये समझो कि मर्ज कर कैसे रहे हैं बस। What we can do is, say we have 2 arrays, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, so we make another array of size 10, okay? अब क्या करेंगे? We have a
पॉइंट हियर आई, वी हैव अ पॉइंट हियर जे, वी हैव अ पॉइंट हियर के। अभी हम लोग हमेशा आई और जे को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर आई जे से छोटा है तो वी राइट आई वाला पार्ट यहाँ पे और आई को फिर आगे कर देंगे, ठीक है। नाउ आई इज हियर, और फिर आई और जे को कंपेयर करेंगे, के को भी आगे करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट टू बी फिल्ड इज दिस। रिमेंबर दीज टू नीड्स टू बी अ सॉर्ट, दीज टू नीड्स टू बी सॉर्टेड एरेज। इन दोनों को अपन मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है। अब ये जो बनेगा ये भी सॉर्टेड होगा बट मर्ज फॉर्म में होगा। अगर तू बस थोड़ा इमेजिन करने का ट्राई करे, विजुअलाइज करे, लेट मी अगेन टेल यू। आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, के यहाँ पे, इनिशियल स्टेज पे, ठीक है। अभी आई और जे के बीच में कंपैरिजन होगा, सिंस ऑलरेडी सॉर्टेड है तो इनमें से जो छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। सो सबसे छोटा वाले को अपने यहाँ लिखे। फिर अगर आई सबसे छोटा था तो हम लोग का ये इसका काम हो गया है, सो विल मूव आई। नाउ वी नीड टू फिल दिस बॉक्स, सो वी आल्सो मूव के तो हर इटरेशन में आगे बढ़ेगा, ठीक है। नाउ वी विल कंपेयर दिस बोथ, ठीक है। तो अगर आई और जे में से जे बड़ा है, जे छोटा है, तो हम लोग जे वाला पार्ट को यहाँ लिखेंगे, जे नहीं एक्चुअली जे के अंदर यहाँ पे जो पार्ट रहेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, ओके। और फिर जे को मूव करेंगे, के ऑलवेज मूव होगा। फिर इन दोनों में से अगेन आई आई छोटा है तो यहाँ पे आई वाला पार्ट को लिखेंगे, इस वाले पार्ट को, आई को मूव किया से अगेन आई छोटा है तो वापस आई वाले पार्ट को लिखेंगे, ओके, मूव करते रहेंगे ऑफ कोर्स। और आई को वापस मूव करेंगे से अगेन आई छोटा है तो हम लोग वापस से आई लिखेंगे। ये तब तक करेंगे जब तक वन ऑफ द एरे एंड्स और बोथ ऑफ द एरे एंड्स। वन ऑफ द एरे एंड्स तो बाकी का जितना एलिमेंट्स बचता है, से इफ वी हैव एक्स्ट्रास सो वी डायरेक्टली कॉपी इट हियर, ओके, जब तक एक एरे एंड होता है। सो दिस इज द बेसिक इंट्यूशन ऑफ द एल्गोरिथम। इसका एल्गोरिथम तेरे को मिल जाएगा बाहर में कहीं पे भी, बुक्स में भी, या फिर ऑफ कोर्स क्लास में तो पढ़ाया जाएगा वो सब। व्हाट वी आर कंसर्न अबाउट हियर इज द रिकर्शन ट्री, ओके। आर यू गाइस फॉलोइंग इन द चैट? आई नो दिस काइंड ऑफ सीम्स टू बी बोरिंग, लास्ट का 5 मिनट में जो बताएंगे वही एक्चुअल हम लोग यूज कर रहे होंगे, बट दिस इज अ थियोरेटिकल नॉलेज व्हिच एवरीवन शुड हैव, बिकॉज you need to relate in order to get things well afterwards, okay। और ये सारे विजुअलाइजेशन से छोटा छोटा बेसिक्स ये करने से ही आता है, ओके, गुड। अगर तुमको मर्ज सॉर्ट का भी एल्गोरिथम देखना है तो तुम यू कैन सी इट एनीवेयर, बट बेसिक यही है, ठीक है। नाउ व्हाट वी लुक एट द, नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला पार्ट, ठीक है। सो हम लोग बेसिकली इसमें एक रिकर्जन ट्री बनाते हैं। लेट मी टेल यू हाउ इट लुक्स। सबसे पहले कि व्हेन वी आर मर्जिंग दीज टू, राइट, ये दोनों को मर्ज करने में हम लोग को दो ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। आई और जे का वैल्यू यहाँ यहाँ तो मूव करना पड़ेगा। फिर इसी तरह चार को मर्ज करने के लिए 4 बार तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जाना ही पड़ेगा, तब जाके हम लोग इसको मर्ज कर पाएंगे 4 में। फिर इसको मर्ज करने के लिए ये सारा एक्चुअली बाद में जाके ना ये मर्ज होने लगता है, इसमें मर्ज मर्ज होकर लास्ट में जो फाइनल एरे मिलता है वो हम लोग का सॉर्टेड होता है। हम इस केस में बताते हैं, जैसे 2 और 3 ऑलरेडी सॉर्टेड है तो यहाँ पे हम लोग 2 और 3 लिख रहे होंगे। 5 6 ऑलरेडी सॉर्टेड है तो यहाँ 5 6 लिख रहे होंगे। 9 1 देखो उल्टा है तो यहाँ पे हम लोग 1 9 मिलेगा। And here we see 8 and 2, so we get 2 and 8. When we sort this, when we merge this, actually we get 2 4 8, okay. Now when we merge this we get 2 3 5 6. When we merge this we get 1 9 2 4 8. So when we merge 1 2 4 8 9, 1 2 4 8 9, अभी इन दोनों को मर्ज करेंगे ना तो ऑफ कोर्स वो वाला एल्गोरिथम जो बताया, आई यहाँ रख के, जे यहाँ रख के और यहाँ पे के रख के, what we'll get is a sorted array, पूरा 1 2 जो भी होगा इसका, that we'll get, that is what basically merge sort is। इसका रिकर्शन वाला फंडा थोड़ा सा है कि it first goes on the left side only, then it backtracks comes to right। when we'll read recursion we'll get to know about it, okay। moving on, we have a recursion tree। why we are reading recursion tree is क्योंकि इसके बाद हम लोग मास्टर्स थ्योरम इफ वी वांट टू टच, वो बहुत थियोरेटिकल पार्ट है जो कि क्लासेस में कवर होता है, विच वी एक्चुअली डोंट नीड व्हाइल डूइंग लीड कोड, तो थोड़ा मोड़ा देखेंगे अपन, ठीक है। सो मर्जिंग विल टेक सी एन ऑपरेशंस वेयर सी इज अ कांस्टेंट एंड एन इज द नंबर ऑफ इनपुट। हमारे यहाँ 2 है तो 2 ऑपरेशन लगेगा, 4 रहेगा तो 4 लगेगा। पहले में ऐसा रहेगा
When we break it into n by 2 and n by 2, यहाँ पे c नहीं लिखते, wait one second. N number of terms, we break it into n by 2, n by 2. Then we break it into n by 4, n by 4, n by 4, n by 4. ऐसे ही चलते रहता है जब तक वी गेट अ सिंगल टर्म एट द एंड. उसको लीफ नोड बोलते हैं, जो ये नीचे का सबसे लास्ट वाला पार्ट रहता है ना, दैट इज कॉल्ड एज लीफ नोड्स. Now everything is going to be broken down into two parts, okay? N by 8, n by 8, n by 8, n by 8, and so on. It carries on until and unless we get a single node, okay? Now what do we have to look into it is कि इसका height कितना होता है. Now how do we find height? Oh, fine. अभी तुम अगर इसको देखो ध्यान से, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स आर हियर, ठीक है. अगर हम इसको एक नोड कंसिडर करते हैं तो देखो, पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 4 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में 8 है, देन ऑफ कोर्स इट विल बी 16. ओके, सो दिस इज अ पावर ऑफ 2, राइट. ऐसे पावर ऑफ 2 में बढ़ते जाएगा. एंड इन अ ग्राफ व्हेन वी कंसिडर हाइट, हम लोग पहला वाले को रूट, ये जो रूट वाला होता है ना, इसको हाइट 0 लेते हैं. दिस इज हाइट 1, दिस इज हाइट 2, कि इस पोजीशन से we get 1 and 2 steps to reach this, so the height is 2. So this, remember this fact, the first one is height 0, second one is height 1. Okay, now see, जब height हमारा 1 है तो हमारे पास नंबर 2 है, दो नोड्स है. जब height हमारा 2 है तो we have 4 nodes. जब height हमारा 3 है we'll have 8 nodes, right? So how many total number of nodes we have by the end? So let's say नीचे में n number of nodes है, तो height हमारा होगा 2 to the power h, right? So how much will be h? h will be log base 2 of n, right? इसको इस साइड लिखते हैं बेटा. Transform. We can't transform it, I guess. Now see, this overall merging n number of elements takes cn of operations. Now n by 2 plus n by 2 will also give n, right? Giving a constant will take cn operations. N by 4 plus n by 4 plus n by 4 plus n by 4 gives n, right? So this will also take cn operations. So overall it will always take cn operations. How many number of times? Log base 2 of n, right? So adding all these, when we get to know the time complexity, so adding cn, 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 how many number of times will we add cn? That will be cn of log base 2 of n, right? So that's why we call that the merge sort has a time complexity of big O of n log n. Okay, why we need recursion tree here is कि recursion में ना कि we can't get it linearly. Either we have to apply Master's theorem, either we have to use substitution rule, or we have to have this recursion tree method. तभी we get to know this. Now I had already prepared this slide for you. Master's theorem, let's quickly get on to the Master's theorem. I also have to discuss one question and then we'll be leaving the session. So yeah, you can wait for some time. Okay. Before Master's theorem, actually, I had to give you more intuitions about this merge sort, but it's getting quite late, so I guess I'll skip that part.
or I'll cover it when we will cover recursion. Okay. um, Next we'll be moving on to the merge, the Master's theorem. Okay. See, one thing you notice. Okay. There is a format when we consider Master's theorem, that we write it in Tn is equals to a times T of n by b plus some function fn. Okay. This is a format in which we represent this Master's theorem, where I will tell you what AB is, what Fn is, where n by b can be floor of n by b or it can be ceiling of n by b. What ceiling of n by b is, it's the opposite of greatest integer function. अगर 4.5 का ceiling बोले तो that is 5. Okay. ऊपर का पार्ट, ऊपर वाला, ठीक है। तो अभी यहाँ n by b कुछ भी हो सकता है, फ्लोर या सीलिंग कुछ भी। What is a, what is b? Let me tell you. इस रिकर्जन ट्री डायग्राम में the number of parts, okay, the number of parts in which we are breaking this tree here currently is 2, right? So our a value will be 2. Okay. Now the division which we are doing, the number by which we are dividing this is our b, so our b is also 2 here. Okay. Let's look at this example once. I have here, बात हो ही रहा है तो ये भी हो जाएगा, ये वाला पार्ट। How do we close this? Yeah. Okay. So here a वैल्यू यहाँ पे 3 है और b का वैल्यू 4 है। So इसका ट्री अगर बनाने को आए तो it will be n, we'll start with n and we'll break it into 3 parts, ठीक है, with 4 divisions, 4 by 4 करके, तो n by 4, n by 4, n by 4. Okay. अब अगला जो होगा will again be in 3 parts. इस तरह से चलता रहेगा. Since our a is 3, so we'll be breaking it into 3 parts, n by 16, n by 16, n by 16 and so on. ठीक है, यहाँ पे भी सेम रहेगा. So this is our a and b. ठीक है. अभी fn पता करते हैं कि क्या है. Yeah. So fn is that function. जैसे यहाँ पे हम लोग मर्ज कर रहे थे ना, तो हर मर्ज में हम लोग को cn लग रहा था, cn टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा था. So fn is that function when it's called conquering state. Okay, this is what we call as division state and this is what we call as conquering state. This is the divide portion and this is the conquer portion. So conquer करने में जितना टाइम लग रहा है ना, वो होगा ये वाला पार्ट, और डिवाइड करने में जो टाइम लग रहा है वो ये वाला पार्ट होगा. इन मर्ज सॉर्ट वाले में भी हम लोग क्या कर रहे थे, ये डिवीजन कर रहे थे, बट जब मर्ज करते हैं ना तो वो कॉन्कर करते हैं. When we divide actually, we are like partitioning. Okay. But when we conquer, that's when we merge, right? इसको ही हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर बोलते हैं, which again we will be learning in detail in this recursion topic. तो अभी ये वाला फॉर्मेट आ गया हमारे पास. अभी मास्टर्स थ्योरम का 2 फॉर्म है, ठीक है. वी विल गो विद द सिंपलर वन बिकॉज़ आई डोंट वांट टू लाइक ट्विस्ट योर ब्रेन्स ब्लॉट. वो क्लास में कवर होगा, फर्स्ट ईयर में जो कवर होगा हम वो बता, फर्स्ट ईयर नहीं सॉरी सेकंड ईयर के डीएसए जब पढ़ाते लोग तब जब कवर होगा विल बी कि आर ए विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड आर बी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2. व्हाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1? क्योंकि जो हम लोग पार्ट्स में तोड़ रहे हैं ना, दैट कैन बी 1 आल्सो. 1 जब होगा तो ये लीनियर हो जाएगा, ठीक है, सिंगल पार्ट, और 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स, एनी पार्ट्स, इट कैन बी इक्वल टू 1. b ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हम लोग बोल रहे हैं बिकॉज देन वी हैव n by 2 में हम लोग तोड़ रहे हैं, फिर n by 4 ऐसा होगा, या तो 2 से ज्यादा होगा, ठीक है, 2 से कम नहीं होगा.
इसका एक और फॉर्म होता है जहाँ पे बी ग्रेटर देन वन होता है, उसमें फिर एप्सिलॉन का कुछ एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, विच इज थियोरेटिकल, तो उसमें ही देख लोगे तो वो बेटर होगा। अभी के लिए हम लोग ये लेके चलते हैं, ठीक है। एंड एफ एन इज अ फंक्शन ऑफ एन, ओके। तो मर्ज सॉर्ट गिव्स अस a golden rule which comprises of three forms, okay. So three forms. The time complexity can be decided with these three forms. अगर हम लोगों को रिकर्जन ट्री नहीं बनाना है तो विल बी यूजिंग दिस, ठीक है। कंडीशन क्या है? a is less than b to the power d, a a is equals to b to the power d, a is greater than b to the power d. Now what this d is, a और b का तो बता दिया, what is the d part? So whatever we have in fn, right, that will be a function of n, right? It can be linear, it can be quadratic, it can be polynomial. So fn will be somewhat like, say, cn square plus rather an square plus bn plus c, or it can be an cube plus bn square plus cn plus d, right? So what is d here? In this part d is 2, in this part d is 3, so that is the degree of the equation, okay. The degree which we have in Fn is what d is. Cool. I'll give you example with the merge sort algorithm. बाकी का we will see. We don't need it. We'll still see it. Okay. Just give me some time. थोड़ा टाइम और दो बस, एक टू सम वाला एक प्रॉब्लम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देके we'll be quitting today's class. So we need to memorize this golden rule for now. You will also understand it with time. And again, if you read about that epsilon one in your second year in algorithms, then you will get a better idea. You will also get an idea where merge sort doesn't work. Okay. Merge sort I'm telling you, where master's theorem don't work. So if it is this, then our time complexity is theta of n to the power d. If it is this, then our time complexity is theta of n to the power d log of n. If it is this, then we have n to the power log p. Okay. Now, how are these coming? You don't need to worry about it right now. How we'll be using it? Yes, that I'll show you. So, अगर हम लोग merge sort का लिखें, so the time complexity can be, it can be order of 1 if of course n is equals to 1, or it can be 2tn by 2 plus cn. How does this come? A हमारा 2 था, B हमारा 2 था, और हमने हर merge ऑपरेशन में कितना ये लग रहा था computations cn, where c is any constant, right? So we have this here, and of course this n is greater than 1. Okay. How are we using merge sort to get time complexity? One way we use recursion tree to get the time complexity as n log n. Now we'll see merge sort to get Master's theorem to get the time complexity of merge sort. See, can anyone tell me what the value of A, B, and D is? Can anyone tell me in chat what the value of A, B, and D is here? In this particular format, what is the value of A, B, and D? You guys need to respond. Hello? You have to respond in order to make this class interactive. It's quite easy. You can clearly see it here, okay? Or let me tell you now. Okay, fine. So A is 2. If you see this form, we have A is equals to 2. B is also equals to 2. And the degree here is 1. Right? Now we need to check in these three or in with these conditions. Right, Arunima? Yeah.
we have to check with these conditions. Okay, so we have a is equals to b to the power d, right? Because 2 is equals to 2 to the power 1. Hence, this condition satisfies the condition case 2 of Master's theorem, right? Case 2 of Master's theorem, which says us that the time complexity will be theta of nd log n, where d's value is 1, so we get theta of n log n. Master's theorem very much uh, simplifies our task to get time complexity, okay? uh, or else we can have a recursion tree, or there is also a method of substitution which we won't be discussing now. This is what a basic idea of Master's theorem is. We can have an in-depth idea, but I think the class is too short for that, and we'll be moving with this example here. See, this is n by 3. If you see here, it's n by 3, and this is this part, 2n by 3, and the cn is the function of n. That is, um, this is actually f of n, which we were discussing in the Master's theorem. Yeah. This is also what we were discussing in the Master's theorem. If you want to get time complexity using this, we can. If you want to get time complexity using Master's theorem, we have a equals to 3, b equals to 4, d is equals to 2. And now b to the power d is 4 to the power 2, that is 16, and a is 3. So 3 is of course less than 16. So which form will be applied in of Master's theorem? That will be case 1 of Master's theorem, right? Where theta is n to the power d. And hence the time complexity of this particular form or the equation will be n to the power 2, that is n square. And we denote it by order of n square or theta of n square. Rather, it's better to write theta of n square. That's the answer for this. That's the basic example of merge sort. If you want some more complex examples, you can find it in any book or online. Now, I guess we are done with the merge sort. We are done with the notations. Now we will quickly look at the problem which we'll have as a homework today. That is in Notion, which you can access here. Let me tell you. Yeah, there, here. We have two problems: to sum and removal of duplicates from a sorted array. I want you guys to put your brains into it and get the answer. Let me tell you what you will be needing here. Just in a brute force approach. We'll be discussing this in the next class with the proper optimized approach. In a brute force approach, you'll need concepts of vector, since in C++ lead code uses vector. And I have already suggested you in my introductory session the use of vector, where you can get the use of vectors and learn about it. So you need to know about array, vectors, and basic loops. With this, you can easily form uh, an algorithm which will give you an answer of this to sum. That will be a brute force algorithm for sure. And you can one more thing that you can like get to know from today's session only. जब हम लोग ये merge कर रहे थे ना, तो we were using this ij, if you remember. So that is a concept of two pointer. हम लोग आज बातों बातों में थोड़ा सा two pointer का concept भी देखे हैं. So even in this, you need something like this, that you have an array and then you need an I, you need a j, and then you need to traverse along it. Okay, this will be a brute force approach, and you need to find I guess it's the indexes in the array which when summed results in the targeted sum of array of I, where I will be any of these two, I comma j. Let me write. Okay, let me give a form to this question. Look, you need to be knowing this mathematical forms. You need to get well with it
in order to understand questions very efficiently, very quickly. So if I had to write this do sum problem, I would write that when we do summation of array of I, or rather we don't need some summation symbol here. When we add array of I plus array of j, that should be equal to targeted sum when there exists I comma j that belongs to, you can write like this, either from 0 to array length, or you can write like this, I comma j that belongs to array of length. So these kinds of mathematical notations you need to get familiar with in order to quickly understand and get well with the questions that will come up in lead code. And in code forces it majorly pops up like this. So yeah, this is all what we did today, I guess. That's quite enough for today's class. I'm sorry I'm half an hour late, but it's okay. सीख रहे हैं यार तो मजा आ रहा है बस, तो just go on with the flow. If you like it, be with it. If you don't, it's your choice. But I can guarantee you, if you are in first and second year, if you go along with this course, by the end of fourth year, by the end of third year, sorry, you will be way ahead with majority of your classmates for sure. So just blindly follow it. You can blindly follow it and do the questions. Even if you don't do theory, you do the questions, because there is a benefit of doing the question, and that is, if you do 50 days regularly, then you get a lead code batch, right? और तुम लोगों को क्वेश्चंस भी नहीं सॉर्ट करना है, हम इजी क्वेश्चंस, इजी मीडियम हार्ड अकॉर्डिंगली whatever will be going on in the class we'll give accordingly. So I guess that will help you guys. This is all we have learned. We have learned the basic of insertion sort. Basic नहीं है, पूरा ही समझ गए हम. तो next time you will get, or you will encounter a insertion sort, you will be, I guess, very much familiar. Even if you don't know everything, you will know कि हाँ ये हो कैसे रहा है. So I have learned it somewhere, I have heard it somewhere, so that's enough. Asymptotic notations, I guess this is a very good visualization that you will get whenever the boundaries touch, when it doesn't touch, when it's lower than it, when it's above it. So yeah, we also looked at the graph. You can get the graphs online for rest of the functions. The more on near closer to the y-axis, the worse the time complexity of your algorithm will be, and more will be the chances of you getting a time limit error in the lead code. Yeah, lead code or code forces majorly. It's time limit exceeded. Sorry. This is the merge sort. We looked at how merging works. We haven't gone through the process of recursion because we had less time. This is the recursion tree diagram. You will get acquainted with it in class, and you will, if you practice. Next, we had the Master's theorem. This is the basic form of Master's theorem. We have a better form, which you will learn in second year. This is more than enough that you have to do for now. Okay, whatever we have seen today is more than enough as you for you to learn time complexity. This was one example using merge sort and some other forms of equations. And this is the two sum that is in the question, and one more question, that is uh, removal of duplicates, right? That I want you guys to encounter yourself. Removal of duplicates. Okay. This question was suggested by Mohit Bhai actually, and that's actually a good question. So you guys go on with the notes. I'll give you the notes in few minutes. And yeah, thank you. I hope you like the class. Thank you. Yep, we'll be ending it. Right.